surprised to be informed by the then regional officer, Shri J. Prakash Chaturvedi ji, that Chardin has the highest mean marks achieved by students for the last 3 years amongst all private schools in the district. That's an achievement that even we didn't know. He also shared that Chardin is leading all the public schools in the districts in terms of CBSE board achievements. As I said, it came as a surprise to me. I always knew that my Chardin students were toppers, but I never knew that they had highest mean marks achievers in the district. Now, while the school already boasts of a huge outdoor space, another addition is an indoor play area designed specially for our play, school and kindergarten children. To enhance learning and eye-hand coordination. A special mention would be to the inclusion of a touch screen table so that the children can learn and play irrespective of the weather outside. This innovative technology would be paired with the play-way method used by our two teachers who have been trained from IIT Delhi. Our little ones are the most important to us, and we have dedicated to provide them with the best of education. ये जो पैंडेमिक हुआ, इसने हमारी इकोनॉमी को ही पीछे नहीं धकेला, बल्कि हमारे बच्चों की जो ग्रोथ थी, उसको रिवर्स किया है। एजुकेशनल जर्नी को जो रिवर्सल हुआ है, which it cannot be measured in years. बिजनेस को आप मेजर कर सकते हैं, हम 2 साल पीछे पहुंच गए, 5 साल पीछे पहुंच गए, लेकिन एक बच्चे के जो वो साल थे, जो उसने मिस कर दिए, और वो जो रिवर्स हुई है लर्निंग, उसके लिए कोई हम लोग गिनती नहीं कर सकते। एक पूरा विश्वास का पहाड़ चाहिए, फेथ का पूरा समंदर चाहिए उस रिवर्सल के लिए, मेहनत करने के लिए, टू अनडू द चेंज, टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। अब बोर्ड ने तो क्या किया, बोर्ड ने एग्जाम से पहले सीबीएसई के सिलेबस रिड्यूस कर दिया, बच्चों के नंबर अच्छे आ गए, पेरेंट्स खुश हो गए, पर ये जैसे कहते हैं ना, पोछा लगा दिया और सफाई नहीं हुई। हमारे टीचर्स जानते हैं और आप भी मन ही मन जानते हैं कि ये जो मार्क्स हैं, ये असल में रिफ्लेक्ट नहीं करते बच्चों की लर्निंग को। जो टीचर्स हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस कमी को रिप्लेनिश करने के लिए जो बच्चों के अंदर आई है, उसको कैसे स्पीडिफाई करा जाए। देखिए, इंफॉर्मेशन आप फीड कर सकते हैं, सिलेबस आप अंदर ठूस सकते हैं, लेकिन लर्निंग की अपनी एक चाल है, हर बच्चे का अपना एक मिजाज है, उसकी अपनी एक टाइमिंग है जिसमें वो ग्रहण करेगा, जिसमें सीखेगा, जिसमें अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाएगा। नाउ दैट विल टेक सम टाइम। और मुझे अपने टीचर्स का पता है कि वो कैसे कैसे जो रोज़ की प्रॉब्लम्स हैं वो आके बताती हैं कि पेंसिल नहीं पकड़ रहा, सेंटेंस लिखना नहीं आ रहा, फ्रेजेस नहीं बना पा रहे हैं, बोर्ड्स को लगातार देखने की क्षमता में कमी आई है। वो सारी चीज़ें वो स्पीडिफाई नहीं करी जाती। और टीचर्स के लिए मैं तालियां बजवाना चाहूँगा कि इस पेंडेमिक के दौरान और इस पेंडेमिक के बाद उन्होंने निरंतर अपने कर्तव्य को पूरे उससे निभाया है, कोशिश करी है, ईमानदार कोशिश करी है, और हर बच्चे के हित को सबसे पहले सबसे ऊपर रखा है। अब आजकल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात चलती है, हर चीज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के टर्म्स में ही बताई जाती है। ये जो बुक्स हैं, ये जो लर्निंग है, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर पे सबका ध्यान है, नई से नई ऐप डालनी है, सॉफ्टवेयर अप टू डेट करना है, पर हार्डवेयर का क्या? जो 2 साल बच्चे हमारे घर रहे, जो उनके हार्डवेयर में कमी आ गई है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? दैट इज इम्पॉर्टेंट। हार्डवेयर से मेरा तात्पर्य है उनकी फिजिकल डेवलपमेंट का। अब देखिए, ये चॉइस आपकी है कि आपको 2% नंबर ज़्यादा चाहिए या बच्चे की लंबाई 2 इंच ज़्यादा चाहिए। बताइए आपको क्या चाहिए? क्या बच्चे के 2% मार्क्स ज़्यादा चाहिए या बच्चे की कमर में 2 इंच ज़्यादा चाहिए? देखिए, अब आप सोचने लग गए ना, ये सोचा ही नहीं अब तक किसी ने।
किताब के किताब, मार्क्स और मार्क्स, एग्जाम्स और एग्जाम्स, इस सब पे लगे जा रहे हैं। पूरे आपके स्कूल में मॉर्निंग में गेम्स होते हैं, इवनिंग में गेम्स होते हैं, और करीब 2000 बच्चों का स्कूल है। मंत्री जी और आप लोग ताज्जुब करेंगे कि सिर्फ 15 से 17 बच्चे शाम को खेलने आते हैं इस 2000 बच्चों के स्कूल में। अब कैसे करा जाए? बार बार बच्चों को कहा जा रहा है, पटाया जा रहा है, लुभाया जा रहा है, मनाया जा रहा है। उसके बाद हमने एक स्कीम निकाली कि जो बच्चा इवनिंग गेम्स में आएगा उसको हम यूनिट टेस्ट में 5% एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, क्लास 6 टू क्लास 9। अब सोचिए, आप एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाते हैं ना, 2 घंटा के नंबर ज़्यादा आ जाए, तो आपके बच्चों के लिए उनके हार्डवेयर को हार्ड करने के लिए हमने 5% एक्स्ट्रा अलॉट किए हैं। पढ़ाई होती रहेगी, हो जाएगी और सब बच्चे कर लेंगे, लेकिन जो लंबाई है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो इसका सीना चौड़ा होना है, वो बाद में नहीं हो पाएगा। कितना ही आप जिम भेज लें, कितने ही प्रोटीन शेक्स पिला लें। The children's efforts. For sure, one more way of cementing the school-family partnership that works so well in the students' favor. I request Honorable Chief Guest, Principal Ma'am, Director Sir, to please come on the stage and honor the students. Was a huge success. The class 12 result made us proud too. In the commerce stream, Kesagar topped with 98.6%. Anshika Chaudhary stood second with 97.8%, and Parth Arora achieved third position with 97.6%. All these students are doing very well and are in one of the best colleges of India. Coming to science, Pritesh Mahajan topped our school with 97.8%, and this child is studying now in IIT Delhi. Followed by Shantanu Singh with 97.6%, and Siddhant Sharma with 95.6%. Moving to humanities stream. This is one stream that nobody really wants to take, but I personally feel one can really excel in life if one takes up humanities stream. Here, Unnati Seni stood first with 97.8%. and she cleared her CLAP exam with a very good score of 158. Followed by Shreya Sharma with 96.8% and Anika Malik 96.2%. All these are my beautiful girls, very, very hard-working girls, and they have done extremely well. Kesagar
Vanshika Singhal and Kashish Garg scored 100% marks in accountancy, while Park and Vyom Mittal scored 100% marks in maths, and Aman Goel scored 100% in chemistry. नृत्य में स्टिक्स का उपयोग कर अपनी खुशी मनाते हैं। A dance that promotes wildness. Unique combination of happiness and wildness. मुस्कुराते हुए चेहरे खुशी बना करते। इनका डांस स्टाइल भले ही अलग हो, पर उद्देश्य वही है। Spreading happiness all around. खुशियाँ मनाने इन्हें भी आती है। It was a unique day of expressing happiness. हमने